Ladies and gentlemen, good day and welcome to the earnings conference call of Ems Ltd for Q3 and 9 months FY'24 for the results. Representing Ems today, we have Mr. Ramveer Singh, Founder and Chairman from Ems Ltd, Mr. Ashish Tomar, Founder and Managing Director from Ems Ltd. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on a touch-tone phone. Incorporated in 2010, EMS provides various services ranging from EPC and O&M in sewage solution, water supply systems, and wastewater schemes for government authorities and local bodies. The company has a demonstrated track record of over 12 years and has executed 68 projects as of December 31st, 2023. EMS has a current order book size of rupees 2,572.68 crore. And now to discuss more, I would now like to hand the conference over to Mr. Ramveer Singh, Founder and Chairman from Ems Ltd, to give his opening remarks. Thank you, and over to you, sir. नमस्कार जी, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ ना जी? हेलो? हाँ जी, परफेक्ट, बोल सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा और अपने बैकग्राउंड के बारे में भी। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने 22-23 साल यूपी जल निगम में एज इंजीनियर काम किया। उसके बाद वहाँ से VRF लेकर के 2006 में और 3 साल का लेवलिंग पीरियड होता है। उसके बाद में 9-10 में मैंने कंपनी शुरू की और उसके 9-10 में कंपनी शुरू करने के बाद में हमने स्टार्ट से वाटर सप्लाई, वाटर सेक्टर में ही अपना काम रखा। तो वाटर सेक्टर में हमारे पास में सीवरेज, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के काम रहे हमेशा, और उसके हिसाब से हम अपना काम वाटर सेक्टर में ही करते हैं। और हम 99% का हमारा सब अर्बन सेक्टर का ही है और सारे काम हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के, जो ADB फंडिंग होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होगी या वर्ल्ड बैंक की, जायका की या KWF की, हम टोटल काम वही करते हैं। और आज की तारीख में एक काम हमारे पास में हेम का भी है, और हेम के हमने 2-3 प्रोजेक्ट और भी बिल्ड कर रखे हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है। और बाकी काम हमारे पास 10 से 15 साल की O&M के साथ में वाटर सप्लाई और सीवरेज के वर्क है ऑल ओवर इंडिया। मैक्सिमम हमारे काम राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी और बिहार में है आज की तारीख में। और एक काम हमारा मुंबई में भी, वो बिल्डिंग का है, वो RBI की बिल्डिंग बना रहे हैं CPWD के अंडर में, 325 करोड़ रुपए का काम है, वो हमारा काम चल रहा है ठीक ठाक। अब ये तो रही बैकग्राउंड, और ये काम हमारे इसमें चलता है। ये इंडिया में वाटर सेक्टर के काम अभी शुरुआती स्टेज में है और इसमें कोई कमी 20 साल तक भी अगर ये काम होंगे तो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और 20 साल बाद जो स्कीम आज हम बनाते हैं दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, दोबारा से फिर उस स्कीम पर काम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह का एक काम हमारे पास में जयपुर में है, जो हम काम कर रहे हैं, वो अब से 30 साल पहले वो काम हुआ होगा। आज हम उसको रीस्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, 300 करोड़ का काम है, वो टोटल पुराने जयपुर का है। इसी तरीके से तो मेरा मानना यह है कि भाई इस सेक्टर में काफी काम है और काम की कोई कमी मुझे तो लगती नहीं कि भाई फ्यूचर में स्कोप में कोई दिक्कत हो। अब आप जो है कंपनी के बारे में अगर कोई रूटीन का वो हो, जो रूटीन के काम होते हैं वो सारे काम आजकल आशीष तोमर ही ज्यादा देखते हैं। मेरे से तो जो पॉलिसी मैटर है वही ये लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं अब
आशीष को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज आशीष तोमर, मैनेजिंग डायरेक्टर। I would like to welcome you to this earnings call of Ems Ltd. And I would invite questions, if any, from the participants of the call. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your questions to 1 or 2 per participant. Should you have a follow-up question, we would request you to rejoin the queue. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Darshil Javeri from Crown Capital. Please go ahead. Hello. Hi. Good afternoon, sir. Hope I'm audible. Yes, yes. Yes, sir. Yeah. Hi. सर, तो मेरे को एक चीज आपसे जानना था कि अभी अपना एम क्या है FY'25 का रेवेन्यू और मीडियम टू लॉन्ग टर्म क्या रेवेन्यू और मार्जिन हो सकते हैं हमारे? हेलो या हाँ सर, अभी अगर 9 months का साइकिल हम देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा इनकम अबाउट 54% इंक्रीज किया है और जो एबिटा मार्जिन हैं हमारे वो लगभग सेम रेंज में रहे हैं। पिछले साल फॉर दिस पीरियड 31% के आसपास था और इस साल लगभग 30% के आसपास है। और पैट मार्जिन देखेंगे तो पिछले साल 21% के आसपास, इस साल 21% के आसपास है, जो पिछले साल 22% के आसपास था। तो जो भी हमारे पास अभी वर्क इन हैंड है वो सिमिलर मार्जिन्स के काम है और जो इस साल में और अगले नेक्स्ट साल भी हम सिमिलर मार्जिन्स मेंटेन करने के पोजीशन में अपने आप को समझते हैं। And sir, what about revenue, sir? Because we've been growing at a very high rate, so अपना क्या एम हो सकता है कि मतलब अभी जैसे we are at 200 crore run rate, so maybe next year can we do 1000 crore because 200 crore तो हम लोग पहुंच गए हैं, so can we reach 1000 crore next year? तो जो रेवेन्यू अभी हमारा अब तक रियलाइज हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, आई थिंक उसका 35% के आसपास ग्रोथ हम टिल मार्च 24 अचीव कर सकते हैं। मतलब ओके, अभी अपन ने मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए, so we've done 65% of the total revenue for this year right now and the rest 35% will be in the last quarter. Yes. Okay. And what about the FY'25, because we are growing at a very high rate, so can we maintain that momentum of the growth that we have? We saw 40% growth, 50% growth. Yes, we expect to maintain similar trajectory और growth जो है इसी 35% 40% की रेंज में रहेगी। ओके सर, अपना ऑर्डर अभी कितना ऑन हैंड है एंड कितना पाइपलाइन में अपन ने बिल्ड करके रखा है? अभी जो हमारे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं उनकी वैल्यू लगभग 1835 करोड़ के आसपास है, जिसमें 2 ऑर्डर जिसमें हम L1 है। एक ऑर्डर विकास नगर का वाटर सप्लाई एंड सीवरेज का है जिसकी वैल्यू 478 करोड़ है और एक ऑर्डर 35 करोड़ का मेरठ में है। और इसके अलावा हमने लगभग 4000 करोड़ के काम बिड कर रखे हैं जिनका रिजल्ट विद इन कमिंग मंथ एक्सपेक्ट
सर एंड सर तो ये ऑर्डर्स जो हो गए मतलब अपन 4000 करोड़ में से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ये सब का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कितना होता है मतलब वी शुड इट टेक्स अराउंड कितना 2 years 3 years टू कंप्लीट ऑल दीज ऑर्डर्स हाउ इज द एग्जीक्यूशन टाइमलाइन? जो अभी हमारे पास जो ऑर्डर वर्क इन हैंड है उनकी कंप्लीशन टाइमलाइन मेजॉरिटी पार्ट की तो लगभग 2 साल है। ये हमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन लगभग 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है और एज फार एज जो बिड्स हमने डाल रखी हैं फास्ट हमारा सक्सेस रेट लगभग 10 से 15% के आसपास रहता है, तो उससे आसपास ही शायद हम होप कर रहे हैं कि इस बार भी मेंटेन रहे। ओके सर एंड सर कोई अपना अभी जब इलेक्शन आ रहा है तो कुछ उसका इम्पैक्ट होता है बिजनेस को और कैश फ्लो को और कोई भी रिस्क आपको दिख रहा है अभी आपके अपने बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं सर, थोड़ा सा बस एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है कोड ऑफ कंडक्ट के चलते, लेकिन कोई रिस्क तो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। बस वो इलेक्शंस के बाद काम सिमिलर पेस पे कंटिन्यू करते रहते हैं। ओके सो सर इलेक्शंस के बाद कैन वी एक्सपेक्ट और गवर्नमेंट मेगा टेंडर्स निकाले आफ्टर जून after getting a proper victory, so can we expect a lot of flourishing activities in June? Yes, sure, क्योंकि अभी जो टेंटेटिव अगले साल का आउटले है उसमें आई थिंक 70,000 करोड़ के आसपास तो वाटर सेक्टर के लिए ही ईयरमार्क्ड है। ओके परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर, मेरे सब क्वेश्चन हो गए, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। थैंक यू। Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask a question. The next question is from the line of Dinesh Kulkarni from JSR. Please go ahead. Hello, sir. Can you hear me? Yeah, namaskar Dinesh. Yes, sir. May I request you to use your handset, please, sir? Can you? Okay, I'm using handset actually. Okay, sir. Okay. My voice is clear, right? Yes, sir. Please go ahead. Okay. Sir, first of all, congratulations on a good set of numbers, at least on the revenue front. But my question is, आप मतलब बता सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इस क्वार्टर में जो है काफी जंप हो गया है मतलब कंपेयर टू रेवेन्यू, तो फर्स्ट उसका कारण क्या है, क्या आप बता सकते हैं? हेलो, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। तो वो तो क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा डिफर करता है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर हमारा जो मार्जिन है वो मोर और लेस +1% ±1% की रेंज में ही रहेगा आई थिंक। ओके, मतलब क्या आप ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है मतलब क्या आप उसका कंपोजिशन बता सकते हैं, मतलब हाउ आप कैसे एक चेंज होता है वो इतना, बिकॉज आपका तो शेड्यूल ऑफ जो वर्क है वो तो फिक्स होता होगा, उसके हिसाब से आपने पहले ही प्री डिटरमाइन किया होगा राइट, कितना कॉस्ट लगेगा वो ऐसे डिफर करता है सर कि काम किस स्टेज में है। जैसे अगर अभी काम शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो उसमें कैपिटल थोड़ा ज्यादा इन्फ्यूज करना पड़ता है, और एज ऑन जैसे काम आगे प्रोग्रेस करता रहता है वो जो वर्क हमने एग्जीक्यूट कर रखा है उसकी बिलिंग होती रहती है, क्योंकि उसमें सब टर्म्स जो पेमेंट जो होते हैं वो स्टेज वाइज होती है। तो जो काम हमने कर भी दिया उसमें कुछ परसेंट जो नेक्स्ट माइलस्टोन है उसके साथ लिंक रहता है, तो वो पेमेंट उस माइलस्टोन को अचीव होने के बाद रिलीज होती है, इसलिए ये थोड़ा डिफर करता है। ओके, ठीक है, मेरा तो अभी यही क्वेश्चन है। इफ आई हैव एनीथिंग मोर आई विल जॉइन द क्यू बैक। थैंक यू। थैंक यू। The next question is from the line of Tej Patel from Nivishai. Please go ahead. हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, please go ahead. हाँ सर, तो सर एक मेरे को भी प्रीवियस पार्टिसिपेंट जैसे एक डाउट था कि सर आप बोल रहे हो कि मेरे सालाना आपका मार्जिन मोर और लेस 1% ऊपर नीचे होता है, पर सर जब मैं क्वार्टरली, पर सर इतना वेरिएशन क्यों रहता है क्वार्टरली? मतलब
मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन होगा? क्योंकि सर इतना वेरिएशन कभी भी हमने कोई दूसरी कंपनी ईपीसी स्पेस में कभी ऐसा देखा नहीं है। तो ये एक मेरा पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, तो सर जैसे क्या होता है, जैसे इसी क्वार्टर में हमने लगभग 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने स्टार्ट किए हैं। तो जब काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत से एक्सपेंडिचर और काम ऐसे होते हैं जिसकी बिलिंग हम नहीं कर सकते मोबिलाइजेशन के लिए। वो जैसे जैसे काम प्रोग्रेस होता रहता है, जो उसका रिटर्न है वो बिलेबल्स के रूप में आगे हमें मिलता रहता है। तो मे बी ये एक फैक्टर हो। अच्छा, और सर ठीक है, ओके सर। तो और एक सवाल है सर, अगर मैं यही सेक्टर में दूसरे प्लेयर्स को देखूं लिस्टेड स्पेस में, अनलिस्टेड स्पेस में, तो सर आपके मार्जिन मतलब वो लोग से काफी अच्छा है, जो मतलब अच्छी बात है। पर सर मेरे को उसका कारण जानना था। तो सर मेरी समझ में ऐसा आ रहा है, तो सर एक पॉसिबिलिटी है कि सर आप ज्यादा वो सुअर नेटवर्क के काम कर रहे हो इसलिए आपके मार्जिन ज्यादा है, और बाकी सारे जो जिसके मार्जिन लगभग 16-17 या 18% जितने हैं, वो लोग ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हो इसलिए वो लोग के मार्जिन कम है। तो सर आप इस पे थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हो कि आपके मार्जिन वो लोग से इतने क्यों ज्यादा है? सर दूसरों के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, हम सीवरेज सेक्टर पर ज्यादा फोकस करते हैं और डिजाइन पे फोकस करने के कारण जो वर्किंग है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, बिलिंग और एग्जीक्यूशन में फायदा मिलता है, और मे बी आई थिंक यही रीजन हो सकता है। बाकी सीवरेज सेक्टर थोड़ा वाटर सेक्टर के में देखें, वाटर सप्लाई के कंपैरेटिव सीवरेज सेक्टर में प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, नहीं तो सर मतलब मैं जब आपकी टेंडर का वो रीड कर रहा था डिस्क्रिप्शन, तो सर मतलब मेरे को वो जाना था कि आपके जो सीवर नेटवर्क के काम है, मतलब जो पाइपलाइन बिछाने के और डिजाइनिंग के काम है, सर वो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर वो कितना होगा अभी? तो आई थिंक मुझे लगता है ऑलमोस्ट 60 to 70% के आसपास होगा। अच्छा, जिसमें आप खाली सीवर नेटवर्क बिछाने का काम कर रहे हो, डिजाइनिंग और बिछाने का काम, पर आप उधर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना रहे, खाली वो नेटवर्किंग का काम कर रहे हो, बराबर सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मोर देन 60%। Yes. और सर हमने पहले, अच्छा, और सर अभी की जो हम टेंडर बिडिंग की बात कर रहे हैं, आपने बोला था कि हम मोस्टली आपने 60 MLD तक के टेंडर बिड के अभी तक सबसे बड़े, और आपने बोला जैसे जैसे हम बड़े टेंडर बिड करते जाएंगे तब कंपटीशन भी कम होती जाएगी, बराबर? क्योंकि सर मेरे ख्याल से 50 से 100 तक मतलब बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है ये। तो सर अभी आप कौन से टाइप के टेंडर बिड कर रहे हो और उधर की कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है, कितने प्लेयर्स है? तो एक उस साइड पे थोड़ा आप गाइडेंस या क्लैरिटी दे सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा सर। तो जैसे अभी हम उत्तराखंड में बिडिंग कर रखी है हमने, ये एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट्स थे जिनका टिकट साइज लगभग 300 करोड़ से लेकर 800 करोड़ के आसपास तक के थे। तो उसमें हमने लगभग 4-5 टेंडर डाल रखे हैं, जिसमें से एक हमें अवार्ड हो चुका है और एक में हम L1 डिक्लेयर्ड है। बाकी 3-4 टेंडर्स के रिजल्ट अवेटेड है। तो इन सभी में सर लगभग हर बिड में लगभग 3 या 2 बिडर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि सर आपका जब 60% है और धंधा आपका सीवर नेटवर्क में है, बराबर, और अभी लेट्स से आपका 30 to 40 आप कंस्ट्रक्शन प्लस आपके जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और वो सारे काम कर रहे हो। तो सर मेरा समझना ये है, लेट्स से आगे जाके आप ज्यादातर काम लेट्स से आपका कम हो जाए, 60 से लेट्स से 30 to 40% ऑफ द सीवर नेटवर्क का काम हो जाए और बाकी लेट्स से आपको ज्यादा ट्रीटमेंट प्लांट्स के काम मिले, तो सर तब मार्जिन के आपके कम हो सकते हैं? क्योंकि मैं जितना समझ रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है लगभग आपके जो मार्जिन से ज्यादा है वो सीवर नेटवर्क की वजह से, जो थोड़ा स्पेसिफिक काम है उसमें आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। तो मेरा यही जानना है कि लेट्स से आगे जाके आपको सीवर नेटवर्क के काम कम मिले और ट्रीटमेंट प्लांट या STPs के काम ज्यादा मिले, तो उससे आपके मार्जिन में कमी आ सकती है सर? नहीं सर, काम की ऐसी कोई कमी है नहीं। अभी तो जो हमारी Tier 1 सिटीज है उसी के अंदर काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसी में ही 30-40% से ज्यादा कवरेज नहीं होगा। बाकी जैसे जैसे कंट्री ग्रो कर रही है, ये Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी ये वर्क जा रहे हैं। तो काम की ऐसी कोई कमी नहीं है। और जो
मिक्स है, हम इसी के आसपास रखना चाहेंगे कि मेजर फोकस अपना यही सीवरेज नेटवर्क में ही रहे। ओके ओके। और सर आपने क्या बोला टियर 1 में भी अभी तक मतलब 30% मतलब 30% जितना ही अराउंड C1 नेटवर्क का प्रॉपर नेटवर्क है, बाकी अभी भी बहुत मतलब 60 to 70% अभी भी काम C1 नेटवर्क का बाकी है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। अगर मेरे को कोई फॉलो होगा तो मैं लाइन में आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ अभय जैन फ्रॉम हेम सिक्योरिटीज। प्लीज गो अहेड। Hello, sir. Congratulations for the great set of numbers. Sorry to interrupt, Mr. Jain. You are not audible, sir. Could you please use your handset? Your audio is not clear. Am I audible now? Yes, sir. Please go ahead. Hi. Just wanted to get some clarity on the guidances. So, sir, is it correct that the guidances for the FY'25 is 35 to 40% growth in the revenues? Yes, we are expecting that. ओके एंड सर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था, ये जो FY'24 के गाइडेंसेस दिए आपने, तो ओवरऑल जितना आपने रेवेन्यू अभी तक 9 months में कर लिया, तो मतलब टोटल रेवेन्यू का आप 35% मार्च में और कर लेंगे, मतलब पूरे FY'24 की गाइडेंसेस अगर आप क्लियर कर देते एक बार। तो आप प्रीवियस ईयर पे आई थिंक 35 to 40% का ग्रोथ हमारा हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू फॉर द क्लैरिटी। सर कैन यू मोर इलैबोरेट ऑन द डिफरेंशिएशन पार्ट? सर आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाकी कंपनी से? सर वाटेक है, आयन एक्सचेंज है, आपके मार्जिन हाई हैं और आपने बहुत क्लैरिटी भी दे दी कि सीवर सेक्टर में ज़्यादा है, बट कैसे डिफरेंशिएशन होता है सर? और ये कंटिन्यू रहेंगे ये मार्जिन सर? लास्ट क्वार्टर में 23% थे, फिर 27% थे सितंबर में भी, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई बॉल पार्क नंबर आप देना चाहेंगे एबिटा में? सर लगभग पिछले 10-12 साल से हमारे सिमिलर मार्जिन ही मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि सेक्टर में काम की कमी है नहीं। और बाकी कुछ सर हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन में भी औरों से बेटर हो या पता नहीं, दूसरों के बारे में तो बता नहीं सकता। बाकी बस प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे और एग्जीक्यूशन के टाइम पे थोड़ा डिजाइन पे और एस्टिमेट वगैरह को ध्यान से देख लेते हैं। मे बी आई थिंक उसी का ही वजह से होगा। सो सर एक बॉल पार्क नंबर की 27 से 28% मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY'25 और रिमेनिंग लास्ट क्वार्टर में? हाँ सर, जो मार्जिन अभी हैं मोर और लेस यही मेंटेन रहेंगे, आई कैन अश्योर। आई थिंक ओके सर, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ V Shalvaraj. Please go ahead. Who's an investor? Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, I just wanted to register my disappointment and irritation for this conference, because the invitation was in English and the entire proceeding is going through Hindi, which I don't know. And if I talk in language other than English or Hindi, whether it is acceptable? I'm sorry for that, sir. If you have any questions, I can answer that. I did not follow so far what was happening. I did not understand. That is why I am unable to make my question, because it may be repetitive. Okay. Do you think that talking in Hindi, but not bothering about those who do not know Hindi in the conference, is it fair? If it is in Telugu, Kannada, Malayalam, Tamil, whether you will accept? Very, very sorry. I am very much disappointed. I am a very serious investor in EMS. I major portion of my portfolio is in EMS, but today I feel EMS has created a record by conducting the meeting in Hindi, which is a unique thing in India. No other company, I think, is doing that. We apologize for that, sir. We will get in touch with you regarding the same. Thank you, sir. We move to the next question. Our next question is from the line of Rishikesh Kale
who's an investor. Please go ahead. Yeah, I'd like to know whether the company has any plans to get into biogas generation from sewerage sludge. If we happen to secure a project that has a component of biogas generation, then we'll be happy to take up. But till now, we have not secured any project in which biogas generation is a viable option. Okay, but you will be more into the EPC space only than in that. Yes. Okay. Thank you. Thank you. To ask a question, ladies and gentlemen, you may press star and 1. Our next question is from the line of Dinesh Kulkarni from JSL. Please go ahead. Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir. Please go ahead. Okay. Sir, first of all, one suggestion here. Can you please, release a press release kind of a thing with the quarterly, earnings? I understand this is, we're still newly listed and, things are in progress. But along with our financials, every quarter, if you could just put a 1 or 2 pager press release or a IR deck, slides or presentation with the key elements for the quarter, or what are your expectations or guidance or anything related to the project, that would really help us to understand, the only reason for the suggestion is like what kind of a stock price movement we have seen in the last few days, post-earnings and pre-earnings, the difference. I mean, it's like, so at least some part of that can be, taken care of. I hope you agree with that. Yes, I'm very sorry for that, sir. And from next time, I think we'll take care of that. Yeah, that's great. And second, can you just put out or give information on what is your capital expenditure, CapEx, for the 9 months, and what do you expect it, for this year or the year going forward, the capital expenditure? Yeah. Hello. Yeah, can you hear me? Yes. So, yep. I don't think we do not have much capex planned. Yeah, but in terms of either in terms of percentage of revenue, you would have something based on your past experience, or what is generally that we can expect, maybe around 2%, 3%, 4%. Because you would need to buy some equipments and materials, right, to execute these projects, because I'm sure they are not project specific. Yep. I think capex would not be part of our expenditure because we do not invest in plant and machinery as much, and we usually take those up on rental basis for our projects. Okay, so everything is based for the project, right? We shouldn't expect a lot of capex from you going forward. No. For any of the projects. Okay, and then another thing is, I see most of our projects are based out of are Uttar Pradesh and that region north of India, which I understand that is still developing a lot compared to the south. Maybe it's Maharashtra, Karnataka, and other states. May I just see, like, do you see how about can you just give us like what's the trend going on here, like North India versus South India, in terms of not the divide, but in terms of like is Uttar Pradesh putting more efforts in the sewage treatment plants, say, related to south of like Maharashtra, or like can you just give some how the trend is going on here? I think maybe it was because the government initially focused on rejuvenation of River Ganga. And going forward, they have been focusing on various tributaries and distributaries of the Ganga River. So, because right now we have bid for a project in Indore, which is also part of the Namami Gange program. So, I think going forward, we will see us going and exploring projects in other states as well.
Okay, but are the projects coming up compared to UP is my question. Yeah. Yes. Many projects are coming up. We have bid for many of those. We have also bid for a project in Jharkhand amounting to near about 787 or 800 odd crores. Also, we have bid for a project in West Bengal. So the projects are coming up all across India, I think. Okay, and then final question from my end, sir. Then just a general, updated I want to know. Do we generally see, government projects or any government-funded projects, irrespective of state government or central government, at some point in time, they end up with having cash payment issues when it comes to actually pay to the vendor or service provider. Are we experiencing anything of that sort in any state or any at the central level? Just a general, yeah. Not much, because majority of our projects involve funding from either from central government or from external aiding agencies such as Asian Development Bank, JICA, World Bank, etc. So because of that, funding is secured and the payment is not a problem. So the payment happens as and when the project progresses, or they're like, okay, they'll say 90% of the work is done, then you will pay the 90% of the amount or something like that. The project, as the project is getting executed, the billing is carried out on base of bill of quantities, and it is proportional to the work already executed, which gets measured by the department, and the bill is presented for payment, and the payment is released after confirmation. Okay, so and there are no delays or issues hence so far? Like any legal issues which you expect or happened in the past? Like major delays? Yep. No, not much. No. Okay, sir. Thank you. Thanks for taking my questions. And all the best. Thank you. The next question is from the line of Ankur Gulati, who is an investor. Please go ahead. सर, आपका जो हैम प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं क्या? अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है. हाँ सर, वो हमने मिर्जापुर, गाजीपुर, दो टाउन है यूपी में, सिंगल प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हम दो टाउन्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और उसका एसोसिएटेड सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था. इस प्रोजेक्ट की केपेक्स अराउंड 145 करोड़ के आसपास थी और लगभग 150 करोड़ के आसपास का 15 साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट थी. तो ये प्रोजेक्ट सर आई थिंक मार्च एंड तक हम कंप्लीट कर देंगे. और इसका कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी एज पर बजट चल रहा है या थोड़ा सा ओवररन है? आपका जो क्रेडिट रेटिंग नोट आया इकरा का, उसमें कुछ कॉस्ट ओवररन का डिटेल्स था, तो उस पर आप जो स्कोप ऑफ वर्क का पार्ट नहीं था वो कुछ काम वहाँ पे हुआ है और उसको डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा आइटम मानकर अप्रूवल के लिए प्रोसेस कर दिया है. तो हमारी तरफ से फंडेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं. और इसमें आपका जो O&M है, तो आपके टोटल कॉस्ट पे एनुअल O&M कितना परसेंटेज, मतलब 100 रुपए का केपेक्स हुआ तो 10 रुपए बनता है अपना एनुअल रेवेन्यू या क्या बनता है? पेबैक पीरियड लगभग 10% के आसपास ही होगा सर. पहले थोड़ा कम था, लेकिन जैसे जैसे अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं तो O&M की बिलिंग भी वो कंपोनेंट हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. पर हाँ, अभी लगभग 10% के आसपास ही होगा. तो जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद जो O&M आएगा वो रेवेन्यू या उसमें जो प्रॉफिट आएगा आपका, वो टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है कंप्लीट, मतलब 15 साल अगर हम लोग चलाएंगे तो अपना कितना परसेंटेज ऑन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बन जाए? नहीं, वो जो मार्जिन है वो तो सर केपेक्स और ओपेक्स दोनों तो हम सिमिलरली लेके चलते हैं, तो जो अभी मार्जिन है वही सिमिलर के आसपास ही ले जाएंगे. ठीक है. और आप बोल रहे थे कि 2-3 और हैम प्रोजेक्ट्स हैं. हाँ जी. उसमें कितना अपना खर्चा हो जाएगा अगर मिलता है तो, और वो कैसे फंड करने वाले? आईपीओ का जो प्रोसीड है वो काफी है या डेट वेट आएगा? हेलो, अभी आप 2-3 हैम प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे हैं, अगर वो अवार्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट
तो उसकी फंडिंग के लिए अपने पास इक्विटी जो आईपीओ से पैसा है वो काफी है या डेट लेना पड़ेगा? नहीं, उसकी फंडिंग तो करानी पड़ेगी सर। तो वो सारा डेट फंडेड होगा? हाँ जी, वो सारा आप बैंक से लोन लेके फंड करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। उसमें सर फाइनेंशियल क्लोजर तो क्योंकि करवाना ही पड़ता है, ये डिपार्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही डेट ऑफ स्टार्ट मिलती है। तो अभी वाला हैम है वो शायद किसी कंपनी, बाहर की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में है, तो नए प्रोजेक्ट जो है वो भी आप जॉइंट वेंचर में ही देखेंगे? हाँ सर, एक दो प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन डेवलप हो जाती है तो फिर उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और साहब अपना जो ईपीसी है इन हाउस हम लोग कितना करते हैं और आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कितना कर लेते हैं? मेजॉरिटी पोर्शन तो सॉरी, हेलो, रिपीट कर सकते हैं क्या, कितना सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? यस, सब कॉन्ट्रैक्ट तो सर हम नहीं देते, सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। बाकी मटेरियल तो हम सारा खुद ही परचेज करते हैं, सिर्फ लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, अभी जैसे इतने इंडस्ट्रियल अपने टाउनशिप्स हैं, जीआईडीसी, एमआईडीसी वगैरह के, तो वहाँ के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं कि अगर वहाँ पे लेके लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए या उसको देख रहे हैं? जैसे अभी तो हम एक हरिद्वार में इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, उसमें हमारा एक बिल्ड ऑपरेट फाइनेंस मॉडल पे एक प्रोजेक्ट है, हमने एग्जीक्यूट किया है। वो अभी हमारा वहाँ पर चल रहा है प्लांट 9 MLD का, जिसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारा अपना एफ्लुएंट हमारे प्लांट पे आता है और वहाँ से हम उन्हें बिल करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका जो एसटीपी होता है वो लोग आप बना रहे हैं या वो आप लोग किसी और प्लेयर से ले रहे होंगे? नहीं, वो भी खुद ही बनाते हैं। अच्छा, ठीक, ऑलराइट, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Tej Patel from Nivishai. Please go ahead. हेलो। हेलो, Yes, sir, हाँ जी please go सर। ahead. सर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के काम करते हैं या फिर हम खाली डायरेक्ट जो हमको टेंडर्स आ रहे हो उस पर ही काम करते हैं? तो डायरेक्ट गवर्नमेंट टेंडर्स ओनली। बिकॉज सर मैंने वो देखा कि आपके क्लाइंट में वबाग भी है, तो मुझे तो बेसिकली वो तो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उन्हें एक प्रोजेक्ट पर क्वालिफिकेशन की जरूरत थी, तो उसमें आई थिंक ज्यादा पेमेंट भी नहीं होगा, वो 3-4 करोड़ के आसपास का ही पेमेंट होगा। तो वो अच्छा, उसकी जेवी पार्टनर फीस थी। ओके ठीक है। और सर जब मैं जॉब वर्क चार्जेस जब मैं देख रहा हूँ आपके पीएनएल में सर, तो उसमें जब मैं देख रहा हूँ तो 70% मतलब करीब सर 50% के ऊपर अपना जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, और उसमें भी सर मैं देखूं तो एक नीर केयर करके एक एंटिटी है जो हमारी सब्सिडरी भी नहीं है, तो उससे हम काफी उधर काफी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। तो सर वो एक कारण हो सकता है कि अपना मार्जिन ज्यादा है क्योंकि नीर केयर से हमको वो सस्ते मतलब कम दाम में वो सर्विसेज मिल रही है सर, ऐसा कुछ है? नहीं सर, बाकी अब वो रिलेटेड पार्टी भी नहीं है। वो आई थिंक जस्ट आफ्टर आईपीओ वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट जो है यहाँ से वो रिलीज कर लिए हैं। अब वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं सर, जो मार्केट में जो बेस्ट रेट्स मिलते हैं उस पे काम देते हैं। अच्छा, और सर ओएनएम का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसकी सर बिलिंग कैसी रहती है? वो ऑफ कोर्स वो सर वो आई गेस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा, पर जनरली कैसी रहती है सर? मंथ क्वार्टरली होती है? मोस्टली क्वार्टरली रहती है। अच्छा, बिलिंग साइकिल क्वार्टरली रहती है मोस्टली। और सर उसपे मार्जिन कितने करीब कितने बैठते होंगे सर? तो सिमिलर मार्जिन पे ही बिड करते हैं प्रोजेक्ट, चाहे केपेक्स हो चाहे ओपेक्स हो। अच्छा, तो आप मतलब भले वो कंट्री मतलब भले वो ईपीसी का काम हो या ओएनएम का काम हो, मार्जिन सिमिलर है आपके केस? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। Thank you. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to Mr. Ashish Tomar, founder and managing director from EMS Ltd, for closing comments. Hello. Yeah, thank you on behalf of EMS Ltd, and thank you everyone for being part of this earnings call. And I would like to conclude this conference.
Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you. Thank you. On behalf of EMS Limited, that concludes this conference. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. You may now disconnect your lines.